शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्लास 8 के लिए। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकेले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल। इसका मैंने आंसर लिखा है, यानी जो जेम्स मिल थे और थॉमस मैकेले, वो क्यों वेस्टर्न एजुकेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसके फेवर में वो थे, तो उन्होंने इसको कि वो क्यों ज़रूरी समझते थे इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। इसका आंसर मैंने लिखा है, जेम्स मिल एंड थॉमस मैकेले थॉट दैट यूरोपियन education was essential in India. The reason behind this thinking was that they think that India was an uncivilized country which needed to be civilized. They were of the view that no sect of Eastern knowledge is comparable to what England has produced. They think that Indians should be given scientific and technical education rather than poetry and sacred literature of the Orient. Question number 5. Why did Mahatma Gandhi want to teach children handicraft? यानी गांधी जी बच्चों को वो दस्तकारी, जो हाथों से जो हम काम करते हैं, वो क्यों सिखाना चाहते थे? गांधी जी was of the view that Western education focused on textbook knowledge instead of lived experience and practical knowledge. He said that education should develop mind and soul of a person. Literary or simply learning to read and write did not count as education. People should know to work with their hands, which would develop their mind and their capacity to understand. That is why he emphasized on teaching handicrafts to children. Question number 6 है, why did Mahatma Gandhi think that English education had enslaved Indians? यानी गांधी जी का ये ख्याल, वो ये क्यों सोचते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए से, इसने इंडियंस को, जो हिंदुस्तानियों को, इनको अंदर ही से ग़ुलाम बनाया है। आंसर इसका, महात्मा गांधी फेल्ट strongly that the Western education has created a sense of inferiority among Indians and made them to see Western civilization as superior and destroyed their pride about our own culture. यानी महात्मा गांधी का ख्याल था, उसका अपना एक नज़रिया था। वो समझते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जिसको हिंदुस्तान में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ज़रिए से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने हमको अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, जो हमारा अपना ट्रेडिशन है, उससे दूर किया। तो और इसके अलावा इसने एक किस्म की वो एहसास कमतरी का जज्ब, मतलब वो सोच लोगों के अंदर पैदा की। यानी कि इस एजुकेशन सिस्टम से जो समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे, उनमें इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी ये सोच पैदा हो गई। यानी जो ये एजुकेशन पढ़ते थे, वेस्टर्न एजुकेशन, जिनके लिए ये मौका फराम किया गया ये पढ़ने के लिए, तो वो खुद को सुपीरियर समझते थे। और जो
اس تک رسائی نہیں پاتے تھے اس ایجوکیشن تک، اس سسٹم سے، تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے تھے. تو یہ چیز اس ایجوکیشن سے. اور جو تیسری بات اس سے ہوئی گاندھی جی کے نزدیک، کہ اس نے ہندوستانیوں کو اپنے ہی کلچر سے دور رکھ لیا. وہ اپنے ہی کلچر، اپنے کسٹم ٹریڈیشن اس کو بھول کر وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو یعنی اس کو فروغ ملا اور اسی میں وہ گم ہو گئے. تو پیارے بچوں، یہ کوشچن آج ہم نے اس کے کیے ہسٹری کے. تو میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر درج کرو گے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرو گے اور ایگزام کے لیے تیاری بھی کرو گے. انشاءاللہ ایک اگلا چیپٹر لے کر میں آپ کی خدمت میں سوشل سائنس سے حاضر ہو جاؤں گا. اور باقی